Good morning guys, this is Shalom Singh Shekhawat and welcome to my channel Travel Codes. So guys, today we are going to do something really very exciting. So please watch till the end of this video. फाइनली आज हम आ चुके हैं स्पाइडर्स पकड़ने टैरेंटुलास। तो टैरेंटुलास पकड़ने के लिए आज हम जाएंगे किसी लोकल के साथ जो कि हमें ले जाएगा उसके खेत में, और वहाँ से अपन स्पाइडर की ट्राई करेंगे अगर हम पकड़ सकते हैं या नहीं। तो चलते हैं स्पाइडर्स पकड़ने। मैं और मेरे फ्रेंड्स हम आ चुके हैं ओड्डार मेंचey, जो सियम रिप से कुछ दूरी पे एक गांव है। यहाँ पर मिलेंगे सुकून से जो लोकल वाइल्ड लाइफ टूर्स कराता है। इसके साथ हम फॉरेस्ट में चलेंगे एंड वी विल सर्च फॉर टैरेंटुलास। Sokun has learned this skill of catching spiders from his father and uncle at a very early age. The practice of hunting for spiders began just after the civil war in 1970s because the natives did not have enough food for their survival and nutritious requirement. Children can start very young to help their family in hunting spiders to earn some extra money. This task is not easy as it looks like because they have to face many problems while catching spiders. As you can see, these are the fire ants and its bite gives a burning sensation to the skin, making it difficult to walk ahead. By seeing silk around the holes, they are able to identify the possibility of finding tarantulas. So finally 1 घंटे के बाद में हमने एक टैरेंटुला पकड़ी है, और ये बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए नॉर्मली कि कहाँ से, क्योंकि आप अगर इस टूल को यूज़ करते हैं तो आप इसको मार भी सकते हैं डायरेक्ट। तो इसने बहुत अच्छे तरीके से इसको निकाला है। आप देखते हैं इसके जो 2 टीथ हैं उसको बाहर निकालेंगे और उसके बाद में हम हाथ में ले सकते हैं। सो देखते हैं क्या करता है ये।
Many times during the search of spiders in the holes, they tend to deal with scorpions and snakes. The cooking of tarantulas is done by frying them into hot oil, but before that, they are washed in fresh water. After that, they are mixed with salt and local spices for taste. Finally, it's cooking time, and let's see what it will taste like. Moreover, in Cambodia, a lot of children suffer from malnutrition, so eating spiders is a good alternative source of protein. Hey guys, thank you for watching this video. I hope you like this video. Please stay tuned for my next video in Paris. Until then, please share, comment and